Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, and a very good evening, Mumbai, the Association of Muslim Professionals, and the well wishers of the both organizations. As just now he said, my brother, I, Muhammad Bashir Ahmed, General Manager of Civil Service Academy, Hyderabad, heartily welcome all of you, the panelists, and as well as the organizations of this very prestigious program. Civil Service Academy is a non-profit, non-political educational organization. It is a platform to create awareness regarding the importance of civil services among the students, parents, and in the community in general, and where mental potential of the youth is guided to blossom from amateur to professional level. Mr. Muhammad Saiduddin and his like-minded friends, Mr. Kareem Irfan from Kuwait, Abdul Khadir Saab from Saudi Arabia, Engineer Abu Bakr Saab, Saudi Arabia, Afsar Fahim Saab from Sudan, all working abroad, started the CSA on 15th August 2020 at Hyderabad. CSA is a platform which is dedicated to develop curiosity and zeal in the student to join civil services and become IAS, IPS, IFS officers and serve the nation and contribute their best talents to nation. Already we welcome our speakers of the day. Once again, on behalf of Civil Service Academy and as well as Association of Muslim Professionals, I welcome Muhammad Saiduddin Sahab, Mr. Abdul Khadir Sahab, and as well as the hero of the day, the man of magic, Mr. Samir Ahmad Siddiqui Sir, the IAS coach from New Delhi. And without taking much time, because it is conducted, I mean, the organization is conducting it in very professional way and international way with respect to their rules and regulations and the time management. Without taking much time, I invite today's the first motivational speaker of the evening, Muhammad Saiduddin Sahab. Muhammad Saiduddin Sahab is from Saudi Arabia by profession, who is an electrical engineer. Hello. And settled long back in Jeddah, that is Saudi Arabia, and his inspiration for many organizations who work for the benefits of the society and the student welfare. He is the honorable founder and as well as president of Civil Service Academy Hyderabad, and we are implementing his ideology of spreading awareness about civil services at different levels of education institutions. Alhamdulillah, till now we completed 80 webinars. Mr. Without taking much time, I request Muhammad Saiduddin Sahab to take over the session and start his motivation talk. The subject which is going to motivate us is golden rules of success. Over to Janab Muhammad Saiduddin Sahab, Jeddah, Saudi Arabia. Sir. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My presentation is okay, sir? Sharing okay, sir. Yes. Assalamu alaikum. Just request Saiduddin Saab to use a mixed language, English plus somewhat Urdu and Hindi, because our attendees are asking for that. Thank you very much. Sure. Thank you very much. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My presentation. Okay, sir. It is visible, sir. Please go ahead. Yeah. Okay. So I welcome. I thank you very much for Association of Muslim Professionals for organizing this webinar. I hope it will be a very big success. Inshallah, the participants will benefit a lot from this. I'm going to present to you 10 golden rules for success, and I hope people will concentrate on this and try to understand what are the rules required for the success. Success means different things to different people. It's really a tricky word actually. Success has got different meaning to different people. For some, getting wealth is a success, and for some others, achieving certain position is a success. But for an individual, success is a status of having achieved or accomplished an aim or an objective. When a person sets a goal and fixes a
a target, when he achieves that, it is a success for him. Being successful means achievement of desired vision and a planned goal. The dictionary describes success as attaining wealth, prosperity, and fame. And generally, the success is a milestone, not a destination, because once after achieving one goal, you will have to go for another goal for your life. Here are 10 rules of success. If you learn and understand these rules and apply them to your life, you will surely achieve what you want, inshallah. Learn how to handle failure. Generally, when you are striving to achieve one goal, you'll have lot of obstacles, lot of impediment. If you want to be successful, you must not only learn how to handle success, but also how to learn failures. Because in success, everybody is happy, everybody is with you. But when failure is there, you are alone. You will become, they say success is having many fathers, but failure is an orphan. Steve Jobs, one of the great, scientists, he was an entrepreneur. He failed, and he was removed from the company Apple's. But he never stopped his work. Actually, he continued to do his work. Later on, he joined the Apple's, and he did miracles. The Apple came out after his rejoining. Similarly, Thomas Edison, when he was trying to invent the lamp, he failed 10,000 times, and every time he had to try again. When he was asked how does he feel about the failures, he said, I only understand that 10,000 ways it will not work. But he continued his struggle and ultimately achieved the invention of bulb. So similarly, people should not afraid of failure. They should continue. Whenever they fall down, they should rise again, and they should try. Napoleon Hill, he said, every adversity, every failure, every hardship carries with it seed of an equal or greater opportunity and benefit. So we should always try to look for that, what is the opportunity when I get a failure, what best I can do for this. Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. Second point is practice art of giving. See, giving is most important thing in life. Everybody takes, Prophet sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है. तो इसलिए से देने की हमेशा आदत रहनी चाहिए. We should try to give. देने वाले बननी चाहिए. Easiest way to give is कम से कम जो words, kind words दूसरों को बोलनी चाहिए. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपका मुस्कुराना भी जो है ना, ये भी एक चैरिटी है. तो आपको जो है, that is minimum we can do for that. You do not need to be rich or do not need money to do this, to talk good. And good words and never insult other people, condemn or blame others. Dale Carnegie said in his book How to Win Friends and Influence People, do not blame and criticize others. Instead, be lavish with praise. जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता. तो ये जरूरी है कि हम हमेशा देने वाले बने, लेने वाले ना बने. Third thing is imagine the outcome that you want. आपका इमेजिनेशन, आपका गोल जो है वो हमेशा आपके जहन में होना चाहिए. एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैव एमिनेटेड फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स that have been constantly working. Imagine the outcome in the mind with constant effort, and all the forces of the universe will work for you. Inspired mind, thereby leading to invention and discoveries. आपके जहन में जब कोई बड़ा गोल होता है, जब आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं, आपका वो पैशन बन जाता है, तो अल्लाह ताला और सारी ताकतें आपको रहनुमाई करती है, आपकी मदद करती है. In a nutshell, you will live your thoughts, and your thoughts will determine your reality. Ralph Waldo Emerson, he said, sow a thought, you reap an action. Sow a thought, आप सोचिए, आपका action बनता है. And sow an act, it will become your habit. And sow a habit, it will become your character. And sow a character, you reap the destiny. तो हमारी जो सोच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. जो आइडिया, जो आउटकम, जो हमारा गोल होता है, उस पर हमको हमेशा काम करनी चाहिए. ब्रेक थ्रू योर लिमिट्स. हम खुद ही अपने आप को लिमिट्स डाल लेते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी लिमिट्स. वी ओनली क्रिएट आवर ओन लिमिटेशंस. यू आर ओनली योर लिमिट्स. देयर इज नो सच थिंग एज इम्पॉसिबल. इफ यू रीड केयरफुली, इम्पॉसिबल को जो है हम कैसे पढ़ेंगे, आई को अलग कर दें आप, आई एम पॉसिबल. यानी इम्पॉसिबल जो है ना, वो एक्चुअली पॉसिबल है. You should always believe in this. Actually impossible कभी कहें तो जो बोलना कि नहीं, it is possible, I am possible. Impossible says I am possible. You have to understand that there are no limits, there are only plateaus. यानी सब जो है खुली सादा जमीन है, आपको उनको क्रॉस करना है. आपको अचीव करने के लिए you have to go beyond the plateaus.
In 1954 में there was nobody could imagine that anybody can run for 1 mile in less than 4 minutes. Even scientists have shown, scientists भी उस वक्त बिलीव नहीं करे कि कोई आदमी 4 मिनट से कम में जो है 1 किलोमीटर 1 माइल भाग सकता है. लेकिन सर रॉजर बेनिस्टर इसने कोशिश की, इसने इतनी अपनी ट्रेनिंग की कि इसने जो है on 6th May 1954 को रॉजर बेनिस्टर completed 1 mile in 3 minutes 59 seconds. So this was the first time he broke the barrier which was there in the world. Nobody could reach this level. But the tricky point is within same year 20 others have also broke this record. So that means there are no limitations. It is only our own limitations. We only kept limitations for ourselves. If we try, we can always get it. So break through your limits. In order to produce outstanding success, you must break through your limits. You must believe in yourself that you can do it, because your beliefs are your own limits. If you wholeheartedly believe and you can do it, you will achieve it. एक Napoleon Hill, एक famous writer है, what he said, whatever a man's mind can conceive and believe, whatever आदमी का जहन जो कुछ भी इमेजिन कर सकता है और अगर उस पर यकीन रखता है वो इंशाल्लाह इट कैन अचीव इट. अल्लाह ताला और सारी मखलूक उसकी मदद करती है, उसको रास्ता बताती है, उसका डेस्टिनेशन के पहुंचने के लिए उसकी मदद करती है. तो यू शुड नेवर हैव लिमिटेशंस. आप जब इमेजिन करते, जब ड्रीम बनाते, तो यू शुड मेक अ बिगर ड्रीम. So bigger the dream, you'll have to work harder for that, and you'll achieve it, inshallah. Fight to be you, and you should never copy others. You should try to be yourself. You must feel you are special and you are unique. If you want to accomplish amazing results in life, you must learn to stand out from the crowd. You must learn to be yourself. ये आप में आपका, you should have your own cap. You should not try to copy others. You need to find your unique selling proposition. आपका अपना एक जो है इमेजिन होना चाहिए, जैसा कि बच्चों का होता है. बच्चे they never be afraid of people around them. They do whatever they want. So similarly you should have your child. But जब बड़े होते रहते तो लोग बड़े अपने को जो है ना they amend करते हैं. उन लोग जो है they make you tamed बनाते हैं कि you should follow, you should take care of the society, you should think of other people what they think about it. But be a child within yourself and try to do whatever you want and be that, and you'll be successful, inshallah. The next successful, the point is be a student, be a voracious reader. अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया तो सबसे पहला वर्ड उसने क्या कि इक़रा. इक़रा का मतलब है कि पढ़ो, read, recite, and you should about. This is the first word revealed to us. Elon Musk, CEO of the SpaceX company, today is he's the richest person of the earth. He developed the rocket by reading books all alone himself. He learned to build rockets. Warren Buffett once said audience during many of the interviews that he spent most of the day reading. And the billionaire investor said one of the keys to success is to read as much as possible, because knowledge works just like compound interest. But unfortunately, not many people will do it. Or unfortunately, Muslim community is not following this rule, which is your first instruction from Allah subhanahu wa ta'ala to read. इक़रा, अभी जो लेडी ने इसका जो इनाग्रेशन किया, उन्होंने भी यही सूरह से स्टार्ट किया. इक़रा बिरब्बिकल इस्मिल्लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. So if you want to be successful, keep reading and be voracious reader. If you want, see, there is a saying that reading makes you complete man, speaking makes you exact man, and writing makes you the perfect man. So you should try to read as much as possible. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. The only way to unleash your inner potential is through learning and improving each and every day. So this is one of the golden rules you should follow. And next thing is to be a teacher. Once, Abdul Kalam was asked in the University of Central Florida that you are a space engineer and you are a professor, but you say you like the title to be called a teacher. Why that? Abdul Kalam answered that when he was in school, a teacher inspired him to be a teacher. And many studies have shown that one of the best ways to learn is to teach. When you share your expertise and teach others what you are at good, you will become better, because you are ingraining that knowledge deeper into your mind. So be a teacher, share your expertise, make a positive impact in this world.
So हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि उनका सबसे बेस्ट जो है ना, he wanted to be called a teacher. He was a teacher and he produced such a good students that they changed the world. Some of the inspirational quotes. If you fail, never give up, because fail का जो explanation अगर full form आप देखें तो first attempt in learning. Fail का जो full form है first attempt in learning. End is not the end. End का जो full form हो सकता है effort never dies. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So whenever there is a no, you should try for again. Suffering is the essence of success. If you want to leave your footprints on the sands of time, do not drag your feet. Work with integrity. Integrity is, this is a very important feature, important characteristic of leaders. As the leader of a country, every action a leader takes must be transparent. Every leader should work with integrity and succeed with integrity. Integrity means doing the right thing, because it is the right thing to do, and this is what makes someone with integrity successful. So you should do, even when you are alone, nobody is seeing, you should do that. That is the integrity. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. So therefore you should never compromise. You should not compromise your integrity and honesty in every situation, even if it is just a small matter. Next thing is follow your dreams. First thing is have a dream, have a bigger dream. If you want to become so great, you must have a dream. Bigger the dream, bigger would be your success. And Allah and all the society, everybody will support you and it will come to your aid. Don't be afraid of taking vision. This is a motivation actually that will, and to break through barrier of ordinary, you need to have a strong and passionate dream to drive you through. And dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. This is what Abdul Kalam has said about it. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action, and action results transforms to success. So dreams are very important for life. And be the inspiration. One should be righteous at heart. There is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in home. And when there is harmony in home, there is an order in the nation. When there is an order in the nation, there is a peace in the world. So this is a statement again, with one of the great person. One must be an inspiration to many people. Everything starts from within you. You can make a difference in the world by becoming an inspiration to others. All birds find shelter during rain, but the eagles are special. Eagle avoid rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. So brothers, this was the summary of golden rules for success. I hope you understand. Try to follow them, and you will become great success, inshallah. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. When I asked Mr. Samir Ahmed Siddiqui sir, Mr. Saeed sir is also going to speak. Which subject should we suggest him? He said that Mr. Saiduddin Sahab is man of action. Let him speak about 10 golden rules of action. And ladies and gentlemen, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. One person with a divine purpose, passion, and power is better than 99 people who are merely interested. Passion is stronger than interest. He started this organization, and he is the best example, Mr. Said, who was talking to you, that he is the best example that don't hesitate, don't think what others think. He started this organization, Civil Service Academy. Alhamdulillah, till now, we motivated some lakhs of people, completed nearly 100 webinars. Thank you very much. Thank you very much, the Bombay organization, who recognized our services and given opportunity to speak to students and motivate them. Inshallah. माशाल्लाह. ये बशीर भाई एक सेकंड, मैं अटेंडीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, काइंडली पुट ऑल योर क्वेश्चन इन अ Q&A सेक्शन जैसे टेक्स्ट भी किया गया है. प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड बट पुट योर क्वेश्चन इन अ Q&A सेक्शन ओनली. जज़ाकल्लाह. बशीर भाई, ओवर टू यू. Yeah, please. Thank you. Now, the time has come to turn to the serious topic of the day. That is all you want to know about civil services.
You may be thinking when Mr. Samir Ahmed Siddiqui will come. He will come at last, because we know that normally when you invite some Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, once he speak, no one will stand. So the organizers knowingly, they adjust the program that the chief guest, the attraction of the program should speak at last. So this we were planning. Hope you understood. And please cooperate with us. And the main subject of the day is all you want to know about civil services. Mr. Abdul Khadir from Jeddah, Saudi Arabia. And he's, Alhamdulillah, one of our founder members of Civil Service Academy. At the same time, is a national sales manager at Binjagar Liver Limited. It's a huge company spread in many countries. Saudi Arabia is head office, and he completed 28 years in the same company. He's from Hyderabad, and he strongly believes in community support and welfare services without taking much time, because again, I'm reminding we have to follow the time management very strictly in this program, particularly without taking much time. I request Janab Abdul Khadir Sahab from Saudi Arabia to take over the session. It is the main soul of the session. For that only, I think all students join this webinar today. Of course, Mr. Samir is there in pipeline. Okay. Over to Janab Abdul Khadir Sahab from Saudi Arabia to present all you want to know about civil services. Sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. It's a great pleasure now to be sharing the stage with AMP Professionals, Association of Muslim Professionals. At the outset, I would like to welcome all the participants, students, parents, management of AMP, and the dignitaries of Civil Service Academy also. Now, the main topic which is given to me today is opportunities in civil services and other competitive exams. I'm sure the audience which are here, they are from the degree colleges, I believe, which I was told. I will try basically to speak in Urdu language also, because some of the participants were raising those questions. Here, first of all, let us understand as Muslims where we stand in civil services. We are merely just 4% in civil services. Despite being almost 17% of the population in India, Muslims have been underrepresented in the civil services with only 4% representation. ये हमारे लिए लम्हे फिक्र है, क्यों हम सिर्फ 4% representation हैं, जबकि हम 17% population हैं. In 2013, 14, 15, and 16, I have just studied it. This number was 30 students out of 900 plus odd. 34 students, 38 and 36 respectively have passed civil services. In 2017, there were 50 candidates, alhamdulillah. Awareness is increasing. That's a good sign. That's what we are here for, to motivate more people to come up to our expectation, take up these challenging positions and achieve the success in life. Muslims representation helps communities empowerment. We as Muslims, youth particularly, need to understand what important role they can play if they take up these civil services. Okay, we should not left out from the governance structures of the country. If we are not in the mainstream, then we will be left behind. We will become, poor history. So let us lead life from front. Lack of awareness, low participation leads to low presence in civil services. Lack of awareness about, first of all, education. Low participants because of lack of awareness on education leads to low presence in civil services. We are basically Ummat Muslimah. And just now, Ms. Sufia Qureshi has also quoted, Iqra bismi rabbika allazi. The first wahi came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Allah subhanahu wa ta'ala was Iqra bismi rabbika allazi. Read, study, educate. We are the leaders of education, Muslims. Yet we are lagging behind because we don't pay attention to the importance of education.
at least pay your attention that Allah subhanahu wa ta'ala सबसे पहले वही में सिर्फ एजुकेशन की बात की है। अल्लाह ये नहीं कहा नमाज, ज़कात, रोजा, हज वो सब बाद में आए हैं, बंदगी बाद में आई है, पहले एजुकेशन की बात की है। That's what I just wanted to emphasize here on education. Here, students, whoever are listening here, please note down, you can choose to be the future of India. Okay? Here, the bureaucracy, where the civil services all dealing with the bureaucracy. It has education secretary, it has superintendent of police, it has chief secretary, advisor to the government, PMO office, all sort of top positions are related to all the bureaucracy. So you need to understand what important role you can play if you join the civil services. Here, what is bureaucracy? You need to first understand what is bureaucracy. A system of government in which most of the important decisions are taken by state officials. Who are these state officials? These are the civil servants who have passed IAS, IPS, IFS, IRS, all those, rather than by elected representatives. And the elected representatives are the leaders, political leaders. They are leaders, they are not that much educated. So they need the guidance from the state officials who are from civil services. Generally what happens, all heads of the bureaucracy are appointed from civil services who have passed IAS, IPS and IFS, IRS. Okay, you need to understand, आपको इस ध्यान में रखना होगा कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, सिविल सर्विस में ज्वाइन होकर, पास होकर आप लोग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. Bureaucracy is the interface between government and public. Bureaucracy again drafts the bills, proposes projects and legislations, approve them. Okay, these are the civil servants who propose, who advises, who prepares all the projects and proposes. Then subsequently what happens, students, bureaucracy informs and implements the approved bills, orders and ordinances. So you can understand what top role the civil service candidates will be playing. They will be basically the advisors, main advisors to the government. Okay, now UPSC, you must have heard Union Public Service Commission. I'm sure you all must have heard about it. Here, I'll now tell you what Union Public Service Commission is all about. So today I will cover what is UPSC, what is civil services, why should you join civil services? Okay, that must be a question that is coming to you, definitely. What is the eligibility criteria to appear for civil services? How to study and the source of study material, right? Then key factors of success I'll be sharing with you. I have been given 40 minutes, so time is passing. I have little constraint, so I'll just jump fast on this. Then myths and misconceptions. Why we are lagging behind? What wrong impressions and misconceptions we have? I want to just clear a few things to her. Here, what is UPSC? Union Public Services Commission is India's central agency, which conducts various exams such as civil services, IPS, IFS, IRS, IA and AS, ICS. There are a lot of it. It has 24 such services fields are there, which relates to UPSC exams. Then civil services examination is mother of all exams. That you need to keep it in mind. This is the toughest exam for those who don't prepare for it. For those who prepare it properly, step by step, then for them it is easy, because I will show you certain examples how ordinary candidates, students at the young age, they prepare themselves very well, then they pass, mashallah, with flying colors. Here, the first Indian civil service exam was held in India was in 1922. I'm sorry. Before 1922, this used to be conducted in England. Okay. So UPSC exam was first established in India in 1926 on the insistence of Indian Congress. Britishers, they allowed Indian to conduct this exam in India and they established UPSC. It was in Allahabad first. Subhash Chandra Bose passed his Indian Civil Services exam. That time it used to be Indian Civil Services. Okay, exam held in England in 1920. There are some more eminent personalities who have cleared ICS from England. What happens, students? Let us understand this. Why this civil services? Because each country need to have certain number of top people who think beyond imagination, who has a lot of knowledge, wisdom.
they can guide the country, they can guide the nation, they can guide the government. Those are elite class people who are associated with civil services, and that caliber standard you need to have to hold these kind of positions, right? Here, list of civil services. Following are the services which one gets on qualifying the civil services. There are so many things into it. Indian Administrative Service, Foreign Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service again, Indian Audit and Account Service, all those things are there. Similarly, the list goes on. This 13, now this is 18. Some more are there, which is up to 24 now these days. So these are all related to civil services. Different roles you play in civil services, okay? Now, why should you join civil services? Unlock your potential, I say to it. Why should you join civil services? Just think about it. To get a fair share of power. We are not in the power. Muslims particularly, our youth are unaware about what power is, what important roles they can play. So we are trying to motivate our youth, educate them. Why should they join? To get a fair share of power. If you are in the power, there are so many things you can do, okay? As I said earlier, that if you are associated with government positions, then you can play important role for the community, for the nation, for everybody, okay? Civil services are considered symbols of great power and prestige. Imagine, okay? Civil services. Then civil services gives excellent opportunities to work towards the country and its citizens. Here, I'm not talking about any particular community. All the citizens, fellow citizens, we need to service them. We need to give them our support. Okay. These are the excellent opportunities you get. Civil services offer a platform for a candidate to serve the country, community at different levels and contribute towards the nation's development. Imagine, you can play very important role to develop the nation, to help the country, serve the community at different levels. So what more we want? So I'm now taking you another step. Who should join this civil services? It's not everybody's cup of tea. If people want to acquire the top positions, they just want to earn reputation, they just want to earn the money, then it's not for them. Please keep it in mind. Who wants to serve the nation and community should join this, okay? Who understands work profile for civil services. Then you need to be very much aware about what civil services, jobs and its requirements and its challenges are, okay? Then who wants to work hard with patience, okay? It's not a shortcut. You need to just put into all the top people at the moment, keep thinking about that, how they decide, how they react, how they plan, how they interact with people. So you start behaving in that manner. Okay, right. Next. Who wants to work hard with patience and determination? Okay, keep that in mind. Now, UPSC exams are conducted in 3 phases. I'm just giving you a brief on this. But preliminary exam, it is the first step which takes the candidate towards the ladder of success. Okay, preliminary exams test the basic knowledge and general aptitude of the candidate. आपका जो general aptitude है वो test होगा. Therefore, this demands the candidates to work on their personalities and aptitude. आप develop करें अपना right from the beginning. It consists of 2 objective papers. Okay, objective papers normally easy होते हैं. अगर आप अपना preparation सही कर रहे हो, तो nothing is difficult and tough. And उसके बाद होता है main. Main में क्या होता है? UPSC undoubtedly looks for in-depth knowledge of the candidate on different subjects. In-depth knowledge, okay? आप पूरे classical example से समझाए जाएंगे, wisdom-based questions होंगे, और very broad type of concept आपको दिया जाएगा. Simple questions से आपको answer दिए जाएंगे. Different complicated questions रहेंगे. They will test your brain power, analytical skills, okay? But the preparation process in itself is a wonderful journey which transforms the candidate entirely. The thought process, the way of looking at the society, the way of interacting with people, and overall decision-making power, as I'm saying, then it consists of 9 papers of conventional essay type. Essay type hai ye, theek hai? So this also you need to understand. Then final stage will be the interview. The final stage, the interview process is completely a personality test of the candidate. उसमें देखें personality test में they don't see how many questions you have answered
and what way you have answered. They see in the personality test your confidence, your analytical skills, the way you precisely speak and give answers to the problems, questions. So that they need. They want the IAS officer who has substance, who has knowledge, who can have a lot of good caliber, confidence, not shaky type. So that's your personality test. So prelims, main, and interview. This is the 3-phase exams UPSC conducts normally. Then the eligibility criteria of UPSC exam: must be a graduate from government recognized university, BA, BSc, BCom, LLB, BA, any discipline, any faculty, you can complete your graduation, then you can appear UPSC exam, MBBS even, BSc, BE, anything. So the age limit students from 21 to 32 years. So I say to everybody here who are listening, students mainly, if you have any questions, just type. We will answer all your questions, all your things. If we are not covering, please let us know. We will try to answer all those points which we have not covered here properly. Okay, right. Now, age limit is from 21 to 32 from OBS, other backward class, from 21 to 35. Then scheduled tribe and scheduled caste 21 to 37. For IS and IPS students, must be an Indian citizen. Okay. Now, category and maximum attempts you can see here on your own. General 6 attempts, OBC 9 attempts, PH 9 attempts. Similarly, scheduled caste and scheduled tribes unlimited, because they have the limitations, they have the economical problems and other awareness, all those things. That's why they give them more thing. And basically, government wants them to come up with unlimited attempts. That's okay, right? Now, preparation tips for UPSC and competitive exam. How to study smart. Here, be consistent and hardworking. Understand more and memorize less. Okay? What happens? We mug up. हमारा जब exam आता है, we just 1 day before, 1 week before, 1 month before, we just mug up, pass exam, just go in the 2nd grade. So we don't have any knowledge after the exams are over. We have shortcut plans, not long-term thinking. So understand more and memorize less. So if you understand more, it will be in you, embedded. Okay. So study thoroughly all NCERT books as a base from 6 to 12 grades. Science, math, social studies, and English. This will be a base for you on for the exams. All the subjects will be covered based on NCERT books from 6 to 12 grades. You remember that, please. Divide your time according to the topics and syllabus. Don't unnecessarily waste time on unnecessary topics and syllabus. Okay. So divide your time, study properly, very smartly. And here now I'll tell you, revise the topics of high importance frequently so that it comes in you. Okay. You understand it properly. So nothing should be, you be worrying about how you give exam, how you approach. It's all, if you understand it properly, nothing is difficult. Plan your study time. Study during the early hours of day, because when you're fresh, early, okay, that gives you 4 hours study in the evening or night. 1.5 hour, 2 hours study when you're fresh is equivalent to that. Remember, okay? Keep yourself far away from all the type of distractions. Eliminate all the time wasters, socializing, gadgets, chatting, friends who are distracting you, social, what you call, gatherings, functions, marriages, all these things. You need to be dedicated for your studies. Then once you achieve certain position, then nothing is wrong. You can involve yourself into anything, right? Right. Here, focus on discipline and time management. Without discipline and time management, nothing can be achieved. Please, okay? Study more about this discipline and time management, how you can bring these things into your life. Then only you can achieve good success, inshallah. Right. Source of study material. I'll just show you a few things. Study previous exam papers and reference books. Okay. This is the way. Then you can note down this. Previous all question papers you can get through this website, which will open out all your queries and worries and doubts, all the things. It will become easier for you. So once you know this, then you are confident. I'm sure. Hundreds of coaching centers are available across India. You can join, but coaching centers normally are commercial type. Be careful. Okay. Coaching centers you join, most of the people that get carried away with their syllabus type, their method of teaching,
then you be creative on your own. Listen to all the previous IAS toppers. They will give you the right insight, I tell you, okay? Then so much information is available online, which can help you prepare for civil services exam smartly, okay? So be selective in joining any coaching centers. On YouTube and Google, students, you will get all the material required for free. This is a jet age. You get everything possible within no time, free. What more we want? Why we lag behind? I don't understand. Only you need to be serious. You need to decide. You need to have your goal. Okay. Then Mr. Nurul Hassan IPS has launched a website. Here is given for all the necessary material for preparation and guidance for civil services and competitive exam. All for free. You're not paying for it. So keep this in mind. This, I think, is on YouTube. You can refer later on also. Right. Key factors for success. I'll just take you through. Strong willpower, dedication, time management, planned studies, hard work, and inner motivation are the keys to success. These are the qualities you need to adopt. Then civil service candidates should keep in mind that grades don't define intelligence. What I'm saying, grades don't define intelligence. And remove the blockade that an average student cannot clear the UPSC exam. Most of the average students have cleared because of their smart thinking. You can do it. Civil services is a game of wisdom. Okay, acquire wisdom. Then only you will be able to pass through easily, inshallah. Invest in yourself to achieve excellence in life. Excellence I'm talking about. Don't just go only for success. Success is nothing, it will come behind you. But try to achieve the excellence in life. Collect books and study material. Read them on a regular basis. You should be a regular reader of Constitution of India and current affairs. This will give you a lot of confidence, a lot of insight about Indian system, democracy. Okay, what all written in the Constitution, what rights you have got as a citizen, what role you can play as a citizen. Then watch interviews and the videos, as I mentioned earlier, of IAS, IPS, IFS toppers and their advices on YouTube. There are umpteen number of such videos and interviews you can get, inshallah. Then here, secret of coming up fast in life. Why we call it secret of success? Coming up fast in life, I'll share with you now. Secret to come up fast in life is pass competitive exams. Okay, here, just think about it. These are the students. Okay, I'm now going to show you all what IAS officer will achieve in a short period. Here, teacher, here, principal, director of schools, here, education secretary. The education secretary who has passed IAS, who is sitting at the top position as an education secretary, director of schools reporting to him, principals are reporting to director of schools, hundreds, lakhs of people are reporting to him, teachers are reporting to him, and everybody is working for students, education. Okay, so here, education secretary who is sitting at the top position, how is it? I'll show you an example here. Students, teachers, principals, directors, and education secretary is the one who is sitting at the top position, and he's a young guy who completes a IAS, who passed through, and he acquires that position. Okay, that's why we call it secret of fast track, we call it. Okay, so you don't have to spend 20 years, 25 years, different positions you're working and getting cheesed off in life. And before retirement, you're just acquiring that position as education secretary. No, at all these positions, government and society and the requirement requires a youngster to come and take up, like you. Okay. Another example I'll give you: police constable, police inspector, superintendent of police, young guy. You can imagine he's an old man. He's also an old man. The young guy is sitting there because with a lot of ideas, enthusiasm, knowledge, wisdom, everything. So that's why we are trying to motivate you all. Take up these positions, acquire knowledge, achieve these top positions, and serve the nation and the community, inshallah. Here, secret of coming up fast in life. A person joins as a policeman in police department. After 5 years, he becomes inspector. And every 3 to 5 years, he gets a promotion. And after 20 or 25 years, he becomes superintendent of police. Imagine, he spent his whole life, and after that he's becoming a superintendent of police. Nothing is left in him. There is not much enthusiasm, not new education, new type of thinking. That's why these positions demand the youngsters who has a lot of knowledge and wisdom.
Okay, but if you pass UPSC exam after putting in hard work for 1 or 2 years, you will become Superintendent of Police, will control the whole department. What more you want? Following are shortcuts to grow in life. Okay, UPSC exam, which I am talking about, State Public Service Commission are there, all these things. Right. Now, this is the again chart. I'll give you fast track growth chart. I have already explained. I don't think I need to spend much time. So this 20-25 years of service you can save if you pass IPS and go and sit at Superintendent of Police straight away. Here, secret of fast track growth in life. What are the exams you can have? I'm showing you. UPSC exams, all Public Service Commission, Union Public Service Commission, IAS, IPS, IFS. I showed you 24 fields are there. Yearly 900 to 1200 positions are there. Then again, Staff Selection Commission, Income Tax Inspectors, Central Excise Inspectors, Central Affairs Officers, Section Office, all gazetted positions, 20,000 to 25,000 posts per year. Then again, competitive exams for further studies. This has all will lead you to 70 to 75,000 positions in a year. We are not able to understand this. We are not trying for this. We are not acquiring these positions. We are away from the mainstream. We are not on the right track. Come on, please try to understand. Be serious in your studies. These are all available for you to study and achieve the positions. Here in India, now tell me, who actually rules the nation? You think President? No. Prime Minister, not the Prime Minister, not the Minister, not the Governor, and even not the Chief Minister. Yes, I agree with you. They are apparently sitting on those positions because they are elected representatives, educationally not much qualified, hence need to be advised and guided. Advised and guided by whom? By all the civil services successful candidates. IAS, IPS officers, IRS officers, they need it. So what happens normally, students, you see, a political leader, he's just a normal political leader. He doesn't have any top position in the government. He gets elected and comes and sits as a chief minister. He has no knowledge, he has no education, and public has elected him. What he does, he needs somebody's guidance, who are educated, who are much wiser than him. So that's why from the centuries, there's a rule going on. There's a system that elite people, top people who are highly educated, who have nice brain, they are given these positions to advise and to guide the government. Then only the country can run properly. Hope you understand this. Here, leaders and rulers of tomorrow. Who are the leaders? Qaideen और कल के हुक्मरान कौन हैं? आप लोग हैं, इंशाल्लाह. हम देखेंगे. This is our wish, our prayers are there that some of you who are listening today, after 5-6 years, you will be sitting at the top positions, inshallah. We want to see you all to understand this, fast track, achieve the positions, inshallah. You are the leaders and rulers of tomorrow, so prepare yourself, bacho. Reasons for lagging behind, try to understand, think about it. What stops you? Okay. Then why do we have low presence in governance? Try to understand and work towards it. So far, I have explained it to you. I hope you understood it well. Now, he is the guy, Ansar Sheikh from Maharashtra, son of an auto driver. ठीक है ना? आप लोग फिर भी अच्छे फैमिलीज के होंगे, वेल टू डू होंगे, फाइनेंशियली साउंड होंगे, या नहीं भी होंगे, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन you can see, get inspiration from all these people who have cracked IAS in first attempt at the age of 21. You know that I have showed you the eligibility criteria. The two basic things are there. One is you need to be a graduate, another you need to be 21 years of age. So this guy, Ansar Sheikh, who is an auto driver's son, how he must have been studying before he appeared and cleared in first attempt. Imagine, alhamdulillah. Here, this is the lady, Tina Dhabi, UPSC, first rank she got into 2015 at the age of 22. Okay. Now here, youngest IPS officer of India in the history, 22 years of age. He is a son of an electrician. Okay. His mother used to be going in functions and making some chapatis and rotis to earn some money. Imagine what kind of resources he must be having, what kind of inspiration he must have been having. Imagine. So what stops you? That's what my question is to you all. Here, you joined civil service in 2019. These are all 19 students you can see who has passed in 2019. You can be among them, inshallah. Here,
16 from Jammu and Kashmir in UPSC exam. Nadia Beg, 23-year-old. They are all from villages. It's a good inspiration for you. Please understand. Okay, this is easy if you understand it properly. Okay, here she sits as an IAS officer. She's making a lot of decisions. She controls the bureaucracy, helps the government run the country. You can be here. This is a young guy, confident. You can achieve this position tomorrow. Here is the place, PMO office. You can sit and be advisor to the government here. What stops you? It's all in our hand. Okay. So form yourself into a group of 10 to 15 good students. Try to study in groups, get motivation and keep going, inshallah. So your target should be UPSC. Okay. So keep your mind, my target is UPSC all the time. The only way to make your dreams come true, students, is to wake up. You can wake up. We can only guide you, give you consultation, counseling, everything. Your teacher, AMP, CSA, all the thing. People will give you guidance, but you should wake up on your own. You should try to make the difference by your own. Okay. Now I'll take you through some myths and misconceptions holding back you from taking up UPSC. It is a tough exam. You answer it now. I have given you all the details. Is it tough or is it easy? Tough for whom? Who doesn't understand. Easy for whom? Who understands it properly. Very long preparation is required. Yes, little bit, because I told you it's a mother of all exams. You need to prepare it properly. You need to improve your vision, your wisdom. And they say generally Muslims are not selected. Wrong. Whoever has appeared. I tell you, Muslim students passing rate is much higher than non-Muslims. Okay. But those Muslims who took this seriously, studied well, they appeared, they passed. Okay, format of exam is complicated a little bit naturally, because they are giving you a top position as an advisor. So they will take you through the complicated exam pattern. No guarantee of selection. It's not there. If you are capable, you are getting the position easily. Only children of rich people are selected. What do you say? You have seen auto driver's son. You have seen people from village. You have seen electrician's son. You can answer it on your own. Remuneration is very low in government services is wrong. Good remuneration is there around, I think, between 1 and 2 lakhs rupees, your salary plus your VIP position, your facilities, your power. Okay, all those things are there with this. Now, these are the toppers I just wanted to share with you all from 2013 to 20. There are 21 toppers here. In this, there are 2 Muslim candidates. In rank 2, there is Athar Amirul Shafi Khan, and in rank 3, there is Junaid Ahmed. These are the inspiration for you and me. Okay? And all these youngsters, I salute them who have passed. Okay? Now, never stop dreaming, students. Okay? The potential for greatness lives within each of us. Allah subhanahu wa ta'ala has made us ashraful makhluqat. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. Allah has made us in a unique form. So use your uniqueness, which Allah has given you. Okay? The small steps in the right direction can turn out to be the biggest step of your life. So from today, try to change your life. Lead life in a right, proper manner with discipline. Life is about moving on, accepting changes and looking forward to what makes you stronger and complete. Okay? So it's all in your hand. It's a rapidly changing world. Try to embrace it. Don't be behind the race. Here, Allah never changes the condition of a person unless they strive to change themselves. Okay? It's all about, yes. Inshallah. Now, those who seek guidance will be guided. Jo hidayat ke talabgar hain, wo hidayat payenge. Only you can change your life. No one can do it for you. Okay? So, you can change this qismat. You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Right? So, it's all in your hand. It's your decision, students, not your conditions. Leave all the conditions you are in. You have seen the people from small background, poor conditions. Okay, right. It is your decisions and not your conditions that determine your destiny. It's all in your hand. Okay, right. Think about whatever you decide now and follow up in your life consistently determines your future. It is solely in your hand. So don't go behind success. Go for excellence. As I mentioned earlier, success will automatically come behind you. Decide when you want to plan to take up UPSC. Collect details of syllabus as I showed you earlier. Now, you plan all these things, invite you all to write down your following, what goals, what you want to become, what you want to, how you want to serve, how much useful you want to become for yourself, your parents, your nation and community. It's all up to you. Okay? Right. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहां होता है. This is Wow. Thank you, sir. Thank Excellent. you so much. Over to you, Bashir Saab. I hope Thank I have just given some inspiration to the you. youth, our students, our community. Jazakallah khair. Thanks for listening to me. Everybody has been wonderful audience. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellent, sir. You presented on time, Alhamdulillah, because I was seeing on the screen that when Mr. Samir will come, but you presented the main object of the meeting today, Alhamdulillah. All we wanted to know about the civil services. Actually, my As said- topic was very long, so I have taken some more time. Yeah, so yeah, couldn't I complete understand, it. sir. Hats off to you. Hats off to you, sir. Yeah. I tried to finish. And Yeah, it is yeah, difficult to cover this vast topic in just 25 Exactly. minutes. We do Exactly. understand when You're absolutely It is. He takes 1 hour actually. for a regular Yeah, Alhamdulillah. speaker, we need to plan some series of program with you. Inshallah, with you. inshallah. Inshallah. I think Samir Inshallah Saab soon. now, Samir Yeah. Saab, it's your time, mashallah. Yeah, Everybody is waiting to listen to you. Right, right. Ladies and gentlemen, the main attraction of our program, the Man of Magnet, the title has given by CSA. That is personally, I have given because I love him very much. Mr. Samir Ahmed Siddiqui has come, and more than you, I was very much excited to hear him, see him, because he was busy in some international programs. And today also I requested him because this is a beautiful organization, and I requested him on my personal request, and he loved the Bombay people very much. I think that's why he has given his special valuable time to present his speech to today's audience. Mr. Samir Ahmed Siddiqui is a widely known IAS coach who has delivered hundreds of in-depth analysis of current scenarios and highly acclaimed futuristic talks. His wide grasp and subject expertise include history of India, the world, and current international affairs. You can find him on YouTube and Facebook, where his lectures are highly popular, have more than 25 million shares, mashallah. He is associated with 100 plus NGOs across India and abroad. He is widely famous coach on futuristic skills that we and our children require to future-proof ourselves, and what changes we require to bring in our education in this age of automation, where average jobs are very fastly taken by artificial intelligence, machine learning, and robotics. He is founder, director of Alif Academy. I request him after his speech to give his details on screen, display his number on the screen, so that after his presentation, you can ask him personally, and you can clarify your doubts. I request my favorite speaker and soul of our Civil Service Academy, the man of magnet, Mr. Samir Ahmed Siddiqui, IAS coach from New Delhi. The topic given to him is Education for Tomorrow, Adapt or Perish. Over to you, and be ready, gentlemen. Now we are going to travel in different world. नहमदुहु व नुसल्ली अला Yeah, please carry on. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. Thank you so much, Bashir bhai. How much you love me, I'll love you more than that. Thank you for giving such an introduction. I also thank and take this opportunity to thank Sayyid Furqan Ahmed Sahab, Alhamdulillah, Farooq Siddiqui Sahab, Sufia Qureshi ma'am, Abdul Razak Sahab, and Amir Idrisi Sahab. He is such a personal friend of mine. I also take this opportunity to thank our chairman, Mohammad Saiduddin Sahab, and one person who is doing a very hard job of going from colleges to colleges and schools to schools to make people enlightened, Janab Abdul Qadir Sahab. You are the real star of every webinar.
देयर वाज वन स्लाइड दैट यू वर शोइंग, उस पे एक नाम लिखा था एक टॉपर का, अनु दूरा शेट्टी. ही वाज माय स्टूडेंट इन 2017 है, बिफोर बीइंग द टॉपर. एंड ही, उनका नाम आया तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, IAS and IPS people, they are highly secular. यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इशिता है, उत्कर्ष है, खत्री साहब हैं. तो मैं अनु दूरा शेट्टी की एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ. मैं जब रोजा रख के लेक्चर देता था, he used to show me the watch at the time of opening the fast. और वो मुझे घड़ी दिखाते कि ये वक्त हो गया है रोजा खोलने का, आप रोजा खोलिए जाकर. So though it hardly matters कि आप किस रिलीजन से आते हैं, इसके बाद आपका रिलीजन वही है जो हमेशा से था, लेकिन एक और बड़ा रिलीजन उसमें ऐड हो जाता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म कहते हैं. So today's topic that I have been given is very important, and I want you to see something before I start. Adapt और perish जिसे कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. एक बड़ी एंशिएंट वॉरियर टेक्निक है, उसे हम समुराई वॉरियर कहते हैं. It's a very ancient technique. It has been cultivated since ancient times, and it has been perfected by a master who is on your screen. ये 5 times samurai world champion है. इन्हें जापान की एक याशाकोवा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बुलाया to compete against their robot. उनके रोबोट के खिलाफ compete करने के लिए. And what they did was this: the robot was brought, and रोबोट को सिखाने के लिए, जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग, where the machine learns by itself, इन्होंने समुराई वॉरियर को कुछ बहुत सारे स्कैनर्स लगा दिए, सेंसर्स लगा दिए. Now the machine can copy exactly whatever he can do, the machine can do. So I want you to see how fast the machine learns. तो इन्होंने पहला कट किया, डायगोनल कट. मशीन ने बिल्कुल लर्न कर लिया, सीख लिया, सेंस को भाप लिया. And machine made some very delicate adjustment, just like a human being. And then machine did exactly what he did. So in the round 1, आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ, फिर मैं दिखाता हूँ round 2 में क्या हुआ. अब ये जो करेंगे मशीन वो करेगी, because he is wearing sensors which the machine is copying. मैं इस पे से रिलेट करके आपको वेबिनार के बीच में IAS के पास लेकर आऊंगा कि what kind of education is required. तो ये round 1 है. इसमें डायगोनल कट किया है इन्होंने. देखिए कैसे 5 टाइम वर्ल्ड समुराई चैंपियन, व्हाट अ परफेक्ट डायगोनल कट ही हैज मेड. मशीन ने अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई, डेटा एनालिसिस आ गया. अब देखिए मशीन क्या करती है. मशीन ऑल्सो लर्न्स, टेक सम टाइम, लिफ्ट्स द स्वॉर्ड एंड देन मेक्स अ परफेक्ट कट, बिल्कुल परफेक्ट कट. उसने इंसानों को कॉपी किया. फिर राउंड 2 आया. तो राउंड 2 में इन्होंने एक अपर डायगोनल कट लगाना था एक फ्लावर में. मशीन ने डेटा को इकट्ठा किया, एक खराब से फूल को उसको दिया गया और उसने भी एक परफेक्ट डायगोनल कट लगाया नीचे से. लेकिन राउंड 3 आते आते मशीन स्टार्टेड सरपासिंग ह्यूमन बीइंग्स. तो राउंड 3 में एक संतरा, one orange was given to the 5-time Bushido samurai warrior, and he made a beautiful perfect cut. 4000 कैमरा ने उसको मशीन को दिखाया, but machine made 6 oranges in a very beautiful perfect cut. लेकिन अब जो हुआ उसने दुनिया को हिला के रख दिया. Now machine was ready to improvise. वो सीख चुकी थी, जिसे कहते हैं automated learning and machine learning. And you see how what the machine did. उसने एक पीनट के बराबर बराबर टुकड़े कर दिए. उसके बाद एक ऐसी चीज आई जिसमें 1000 कट करना था. मशीन नहीं थकी, लेकिन इंसान काटते काटते थक गया. And in the 4th and the final round, the machine was the winner, whereas some sweats, some fatigue, some tiredness was seen on the face of the human warrior. इस दौर के लिए हमें एजुकेशन को हासिल करना है. इस एरा के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना है. Those people who are studying, जिनकी हेल्प आज तक ANP करता आ रहा है, स्किल अपग्रेडेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, उन्हें यह एहसास होना चाहिए that the era in which we have entered post-COVID, something which is very different. उसके बाद इंसान को अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने एक काम किया. इन्होंने एक ऐसी चीज की जो मशीन नहीं कर सकती. तो
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बुशिडो समुराई वॉरियर ने नेक्स्ट लेवल पे एक ऐसी चीज कर दी जो मशीन के बस का नहीं था। इनके तरफ से बुलेट को फायर किया गया, इन्होंने अपनी तलवार से उस बुलेट के 2 टुकड़े कर दिए। Now this was a feat which the machine cannot copy. तो इंसान एक बार फिर जीत गया। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उस बुलेट के 2 टुकड़े हुए। So I just want you to see. And let me open the voice so that you can hear the voice of the bullet. Bullet in midair. Now, it's rumored that Machi-san has taken hand-eye coordination beyond every other human on Earth. He claims to be able to cut a speeding bullet in midair. Now keep in mind the average Now you reaction see time of a what he human did. to any अब देखिए आप उन्होंने give you कैसे some किया, मैं आपको off सिर्फ दिखाना चाहता हूँ which कि how perfectly he did. lift. This is something which no machine can copy. ध्यान से देखिए। I heard it, but I didn't see it. I saw a flash. The blade went by. And Yeah, that was कहते amazing. हैं बच्चों, इसे कहते हैं either you have to adapt or you will perish. The era in which we have entered, it's an age where average is over. It's an age where the machines, they learn at least 100 times faster than human beings. So being a human being, we have to do something that the machines cannot copy. I have brought in another video of a TED talk where the drones are talking with each other, how to fly information. And this video, mind you, is 5 years old. आप देखिए यहाँ क्या होता है. I want you to see that the small machines, they go up in the air. Their weight is about a slice of the bread. इतनी हल्की मशीन आसमान में जाती है, and then it calls all its helpers. और आप देखोगे the machines, they start coordinating and talking with each other. This is an era for which education has to change. This is an era for which we have to change the way we educate ourselves. And do you know, after all the drones, they come in sky, they coordinate with each other. आपने एक वर्ड सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपकी स्क्रीन पे जो है उसे कहते हैं AGI, आर्टिफिशियल एंड जनरल इंटेलिजेंस. यहाँ पर मशीन को पहले से प्रोग्राम नहीं करना पड़ता. The machines, they learn for themselves, and the machines, they adapt and they talk and they coordinate. क्या हम ह्यूमन बींग्स होकर ऐसा कर रहे हैं जैसे ये फॉर्मेशन में लाइट्स जला रही हैं? दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू पॉन्डर. इस एरा के लिए हमें तैयारी करनी है. एक एग्जांपल और देता हूं प्रॉब्लम का, एंड देन आई डिस्कस ऑल द सॉल्यूशंस विद यू दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, रादर टुनाइट ऑनवर्ड, what are the changes you need to do with the way that you study and educate yourself. मैं आपको सिर्फ एक चीज और दिखाना चाहता हूँ. ये ब्रिक लेइंग कर रहे हैं ड्रोन्स. ये ब्रिक्स को उठा कर रख रहे हैं. एवरी ब्रिक इज मोर देन 1 kg. उसको वो उठा कर फॉर्मेशन में रख रहे हैं. दे आर लर्निंग हाउ टू कीप दैट. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर पिरामिड जिसे फराओं ने बनाया था, उस दिन से ये जॉब का पिरामिड आज तक चला रहा है. AMP के इस प्लेटफॉर्म से मैं इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ. फराओ वाज ऑन द टॉप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑन द सेकंड, सोल्जर्स, स्क्राइब, मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, पीसेंट्स. ये पिरामिड ऐसे नीचे नीचे जाता है, लेकिन एक बहुत खास बात है. स्टार्टिंग फ्रॉम सोल्जर्स, पीसेंट, द पीपल आर कॉल्ड एज मिडिल क्लास. लेकिन इन मिडिल क्लास का हर वो जॉब जिसका एल्गोरिथम लिखा जा सकता है, one which can be broken into number of programming steps, one which can definite repetition, वो सारे जॉब अब मशीन करने वाली है. If you want, ये पूरा का पूरा middle part of the pyramid is going to collapse and it is going to tap down here in the slaves category. And mind you one thing, slaves की कैटेगरी ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है. आप यहाँ जब नीचे आओगे तो आपको जोमेटो या स्विगी की तरह खाना बेचने का नया तरीका सीखना होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत होटल्स हैं जिन्होंने मार्केट को ओवर क्राउड करके रखा. So either you have to go with this one, the government officials, or you have to adapt yourself into something like concept, basic design,
फंक्शनल डिजाइन, डिटेल्ड डिजाइन, इस तरह की अगर आपने तैयारी नहीं की ऑफ योर सब्जेक्ट्स, योर लेसन, क्या पता दो पीपल हु विल बी डम्प डाउन एट द बॉटम, उसमें हमारा भी नाम। सूफिया कुरैशी मैम कह रही थी कि एएमपी के, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, एएमपी के अच्छे कामों में से एक और काम है, और वो काम इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन करते हैं। वो एएमपी में मुस्लिम है, लेकिन इररिस्पेक्टिव एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। आई नो ईच वन ऑफ the officials of AMP, they are very secular by nature, लेकिन उनका सबसे अच्छा काम जो है वो ये है, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रेनिंग एंड वेरियस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। पर मैं एक बात AMP को उसी के प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ, आपका ये काम 1000 टाइम्स बढ़ने वाला है, 1000 टाइम्स बढ़ने वाला है। ये एक रोबोट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रशिया की डॉक्यूमेंट्री से, and this is the robot which can copy human beings. तो ये जापान के एक प्रोफेसर है ओसाका, he is considered as a controversial figure। आप नहीं के मुंह से कुछ क्या करते हैं। Japanese professor Hiroshi Ishiguro is one of the 20 most ingenious people of our time. I have created the first Android. I got a one of the question most 20 genius people है इस समय दुनिया के। इन्होंने एक एंड्रॉइड सिस्टम जो हम यूज करते हैं फोन में, उसकी ये इंजीनियर है। इन्होंने अपना कार्बन कॉपी रोबोट बनाया है, पर इस रोबोट की एक खास बात है, he copies the behavior and the character of his master। इस रोबोट को इतिहास का, हिस्ट्री का पहला ह्यूमनॉइड, जेमिनॉइड रोबोट कहा है। और इन्होंने इतना ही नहीं किया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉपी किया है, एंड शी कैन कॉपी द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर। अब आप सोचिए, बिहेवियर तो वो चीज है जो इंसानों को मशीन से अलग करती है। आपको एक रोबोट से और मिलाता हूँ चलने से पहले, एंड दिस इज द रोबोट आई वांटेड टू सी। इस रोबोट की खास बात है, दिस इज द फर्स्ट रोबोट टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। इसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। 15,000 parts. Special characteristics: a ladies' man, looks like a tin man. देखिएगा Fedor करके, and Fedor can not only talk with you, but it can drive your vehicle. Such a driver does not even need auto repair services. And he can Fed drive. with his native He city of can repair Magnitogorsk, your Fedor auto. drives quite He confidently can though. do these many things. तो आप सोचिए कि उस मिडिल पार्ट ऑफ पिरामिड में कितनी सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे AI और मशीन लर्निंग के हाथ में जाने वाली है। मैं आपको एक AI का एग्जांपल बता दूं जो आपके फोन में है इस वक्त। हम उसे YouTube कहते हैं। YouTube देखिए क्या करता है। YouTube हर बार हमें हमारे पिछली सर्च से एक स्टेप ऊपर थोड़ा सा अपग्रेडेड वीडियो सजेस्ट करता है। Every video that follows the previous video is a bit higher in taste। इसका मतलब है YouTube ने बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर की पसंद ही नहीं रखी, उसने वीडियो को कैटलॉग करके रखा हुआ है कि which is the next video that will be liked by the user। AI और ML का ये नमूना हम अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। I hope you are understanding what I am trying to say। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो एक बार रेज हैंड का बटन दबाइए so that I can show you the solution। मैं आपको कुछ solutions बताऊं। What are the solutions that we have to do in terms of what you say education? So this brings us to this novel experiment which is on your screen, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें किया ये गया कि एक बहुत अच्छे इंसान के यहाँ पर they made some electrodes लगाकर उसको CT स्कैन की मशीन में डाला गया, and then he was shown a series of pictures and it was seen कि दिमाग का कौन सा हिस्सा है which gets enlightened and enlivened and which is the part of the brain जिसमें blood flow increase होता है। So he was shown this photo first. When he concentrated on the design of the mug, the right side of the brain started glowing। यानी एस्थेटिक्स को, ब्यूटी को, डेकोरेशन को हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन अप्रिशिएट करता है। Then he was asked to concentrate only on the coffee mug. The left side of the brain started glowing. इसका मतलब when it comes to analytics, analytical, logical, plain and simple, तो left side of the brain जो है वो काम करता है। Then the patient was shown second, this photo। When he was asked the question, what is the age of the lady?
जब उसने एज देखना स्टार्ट किया तो इट वाज द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन व्हिच वाज वर्किंग। लेकिन पूछा कि एक्सप्रेशन चेहरे पे क्या है, जैसे एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट किया, हिज राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टार्टेड ग्लोइंग। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पढ़ाई कैसी करनी है, रोबोट को कैसे हराना है? What differentiates us? Left is analytical, left is computational, left is engineering, left is medical, but the right is aesthetic, right is practical. जब उन्हें ये फोटो दिखाई गई, when this first photo was shown, it was the left side of the brain. Excuse me, Samir sir, I'm extremely sorry. क्योंकि compared to the previous seminars, your voice was like beautiful. Now it is not that much of clear, sir. Can you check? Acha, voice is not clear? My voice is not clear, sir? It's okay. I think parallelly. It's okay. It's okay. You can go ahead. Okay. Let me see if I can do something in the audio. Yeah. Because he used to speak something different. It was so clear. What shall I do now actually? मतलब बहुत कम आ रही है क्या? Is it coming very less? No. थोड़ा मोटी आ रही है आवाज, लेकिन अच्छा है, not bad. हाँ, नॉर्मल जिस तरह आप बात करते हैं ना प्रीवियस प्रोग्राम, ऐसा नहीं आ रहा है. Okay. Let me try to speak a bit louder. अभी तो इतना ही कर सकते हैं. Sorry so much. So when he was asked to concentrate on this photo, it was the left side of the brain which started working. But when he was asked to concentrate on this photo, again, it was the right side of the brain which started working. And then the last photograph was shown. When the patient concentrated, rather the experimentee concentrated on the gun, it was the left side of the brain, right side of the brain started glowing. But when he was concentrated on the background, it was the left side of the brain which started glowing. इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं. One is the left side, another is the right side of the brain. Now I am going to tell you the formula, the first formula that you must change while you study. The formula is this. ध्यान से सुनना. 100 billion cells हैं. They communicate with 10,000 of their colleagues and they make quadrillions. So the left one is logical, verbal, digital, maths, rational, linear, analytical, system analytics. But the right side of the brain is art, sees the big picture, loves emotions, goes for imagination, loves the surreal novelty and uniqueness. सबसे बड़ी बात, the biggest qualification that you would need, the right side of the brain is creative. It is creative, adaptable. क्या आप अभी समझे मैं जो कहना चाहता हूं? अगर नहीं समझे तो ये देखिए. Left is detail oriented, analytical, practical, cautious, planned, logical, control. लेकिन right is emotional intelligence, social intelligence, holistic thinking, compassion, imagination, perception, creativity, empathy. सुनना पहला real. अगर कुछ बनना चाहते हो, even if you are a doctor, even if you are an engineer, और आप सिर्फ अपने left brain से काम लेते हो, then all these left brain functions would be replaced by machines. Machine learning इसको replace कर देगी. But all these right brain functions, they can't be copied and replaced by machines, at least for now. तो आप जो भी पढ़ रहे हो, उसमें you have to bring the holistic thinking. जो भी पढ़ रहे हो उसमें you have to bring the creativity, उसमें you have to bring the social intelligence, empathy, intuition, reasoning, creativity. You have to bring the compassion. वो डॉक्टर्स, अपोलो ने एक ऐप निकाला है, 15 मिनट में डॉक्टर विल कम ऑन जूम टू डायग्नोज यू. इससे कौन है जो क्लिनिक जाएगा? हर कोई वो ऐप डाउनलोड करेगा. हाँ, उनके क्लिनिक चलेंगे जो कंपैशनेटली लोगों का हाथ पकड़ के उनसे कुछ
दिल की बात करते हैं, जो उनका दिल जीतते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, दिस इज समथिंग दैट द ऐप एंड द ज़ूम कैन नॉट डू। तो आपको पढ़ते समय अपने राइट ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा। जब रोबोट से कहा गया कि पेंटिंग करो तो उसने ऐसी पेंटिंग करी, उसने ऐसी पेंटिंग बनाई, बड़ी एनालिटिकल, बड़ी स्केची, बिल्कुल लॉजिकल। लेकिन जब इंसान से कहा गया तो उसने पेंटिंग ऐसी बनाई। कैन यू सी द पेंटिंग? ये चाइल्ड विक्टिम्स पे बनी हुई पेंटिंग है जिसमें बच्चों के साथ घरों में गलत हो रहा है। Can you see this painting? There is so much in my eyes which wants to come out. This is what the robots cannot do. What robots can do, what AI can do, what machine learning can do, they can copy the left side of the brain, but what can make you superhuman or go up the pyramid is the involvement of the qualities of the right side of the brain. जब तक राइट साइड ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, चीजों में वो बात नहीं आएगी। लोनलीनेस ऑफ अ विमेन पे जब रोबोट से कहा गया एक पेंटिंग बना, वो नहीं बना पाया। इंसान ने देखिए क्या बनाया। और एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बहुत अच्छा कहा गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये क्या गम है जो छुपा रहे हो, इस पर पेंटिंग बनाओ। AI and ML cannot make a painting क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को शायरी समझ में नहीं आती, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन ने ये बना के दिखाया। ये इंसान ने बनाई, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, ये क्या गम है जो छुपा रहे हो। और ये दिन बहुत दूर नहीं है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले टू बी ऑन सेफ साइड हम ऐसा कहते थे ये अगले 10 साल में होगा, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का 2020 का ड्यूरिंग लॉकडाउन टोक्यो में, बीजिंग में लगा हुआ एक बहुत बड़ा मेला है। The coolest robots. मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूं। दिस इज अ कार which can sense your senses. It does not require a steering. It does not require any brake. It does not require any accelerator. ये सिर्फ आपको आपके सेंसेस को महसूस करके it can drive है। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक वेटर है बड़ा खूबसूरत। वो वेटर क्या करता है? The waiter serves in the 5 star। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उस वेटर ने क्या किया। I want you to see a waiter which can serve in the 5 star। लेकिन ये देखिए, ये वेटर है। This waiter is an automated waiter which can serve in the 5 star। इसको देखकर ऐसा लगता है ना कि अभी इसको आने में 6 साल 7 साल हैं। तो I have a shocking news for you। मक्का की हरम की मस्जिद में ये रोबोट आ गया है टू स्प्रे सैनिटाइजर। इस रोबोट को खरीदा गया है मक्का की मस्जिद में टू स्प्रे द सैनिटाइजर। और ये मक्का के एक उम्रा करने वाले ने वीडियो बना के भेजा है। सेम रोबोट नाउ अडेप्टेड टू अ न्यू टास्क। इट मींस machines are adapting very fast. So what shall humans do in order to have the new jobs or to clear the competitive exams? मैं आगे चलूं इससे पहले एक बार थोड़ा सा रेज हैंड करिए ताकि मुझे समझ में आए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। My voice is reaching till you guys. So here is the first thing. I hope the pen and paper is ready because कदीर साहब ने बहुत अच्छी चीजें लिखाई हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? AMP की एक खास बात है, दिस वेबिनार विल बी ऑन YouTube, तो बार बार आप उस पर जाकर कदीर साहब की हर इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं। So here is now what I am concentrating on. The reality is that the new jobs created by technology, AMP के प्रोफेशनल्स को बोल रहा हूँ मैं ये बात, AMP के फंक्शनल अथॉरिटी मैनेजमेंट से कह रहा हूं, कौन सी दुनिया में हम जा रहे हैं, वहां AMP का कितना बड़ा रोल है आप समझिए। द रियलिटी इज दैट द न्यू जॉब्स क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी, इट विल एम्प्लॉय अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल, दोज फ्रैक्शन हु विल अडैप्ट, बट इवन दोज जॉब्स विल डिसअपीयर सून आफ्टर दे आर क्रिएटेड। इसका मतलब AMP को अपना फंक्शनल अपग्रेडेशनल काम कितना बढ़ाना होगा। So where will the millions of middle-aged people go? Here is the answer from Forbes magazine. Technology is advancing simply too quickly for the newly unemployed to learn the new jobs. Technology इतना fast change हो रही है. It is not giving us the breathing space to upgrade. तो क्या करना चाहिए? पहले attitude को change करना चाहिए. Point number 1. आज से बिलीव दैट यू आर अ लर्नर फॉर लाइफ।
You are a learner for life. आपकी फॉर्मल स्कूलिंग जिस दिन खत्म होगी ना, असल में उस दिन से पढ़ाई शुरू होगी। और जैसे चूहे अपना चीज महकते हैं, उस तरह आपको अपने जॉब को सूंघना होगा पूरे वक्त in order to see that how long my job will survive or do I need to upgrade now? क्या मुझे अभी के अभी अपग्रेड करना पड़ेगा? This is what we have to do. So what needs changing and what's changing? So following are the things, हर chapter, हर skill, हर engineering, हर medical के student को first they have to think about the creativity in their subject. Is there anything that you can convert into an app? Is there any service that you can provide in your app that can serve millions? जितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, ग्रेजुएशन करने वालों से कह रहा हूं, आपको एक काम करना होगा. You have to start developing an app at least in your mind while you are doing the graduation. Creativity is the first thing, that first qualification जो आपको रोक के रखेगी. फारूक अहमद साहब हैं यहाँ पे, फारूक सिद्दीकी साहब हैं, फुरकान अहमद साहब है, आप उनसे पूछ कर देखिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ. क्रिटिकल थिंकिंग, IAS और UPSC किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं. They will ask you what Google cannot answer. They will ask you what Google cannot answer. And that is the critical thinking. It does not mean criticism. It means बहुत detailed, in-depth analysis आपको अपने अंदर लाना होगा. तीसरा, insight. क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको स्पेशलिटी है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी गहराई सिर्फ आप जानते हैं? अगर हाँ, तो ये सेंचुरी आपकी है, वरना यू विल बी डंपिंग डाउन इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड. एक और ऐसी चीज है, डू यू अंडरस्टैंड द डिजाइन? डिजाइन बनाते वक्त झाड़ू मत बनाना. झाड़ू लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन बनाता है, उसको वैक्यूम क्लीनर, सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ स्कैनिंग बनाना, यानी इन्वॉल्व द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. Involve the right side of the brain. उसके बिना नहीं चलेगा. Situational intelligence, problem solving. 3 क्वेश्चंस पे दुनिया की हर कंपनी का इंटरव्यू खत्म हो जाता है. What value can you add to our organization? How can our product become differentiated after hiring you? And how you see the market getting evolved in the next 6 years? आपके पास इन 3 चीजों के जवाब नहीं होंगे तो वो कुछ नहीं होगा. You have to invent, you have to innovate, you have to solve problems, and you have to be very mentally adaptable and mentally agile. You have to be very mentally adaptable and mentally agile. इतनी चीजें अगर अपने स्किल, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में नहीं चेंज करोगे तो आने वाले जमाने में we will become perish. Can I see a raise of hand before I take you to the next set of things that you have to do? Can I see that my voice is reaching properly? थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए. This is the only feedback that I get. Now this brings us to the second slide. ध्यान से देखिए. What's unchanging? कौन सी चीज है जो बदलने नहीं वाली है और हमें उस पर महारत अभी से बरकरार रखनी चाहिए? Communication skills. ये बदलने वाली नहीं है. The robots cannot persuade or influence. आज तक ATM की मशीन हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई. Can you persuade? ये जो बात करने के तरीके में इंटोनेशन है, इंटेंशन है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो मास्टरी ऑफ लैंग्वेज है, आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी. You have to move others. Can you move others to action? लीडर्स नहीं बन सकते रोबोट कभी. They cannot engage people. Can you galvanize support for one's ideas? ये चीज है जो रोबोट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. Can you move others towards a shared goal? And what needs changing, जो आपके अंदर बदलना चाहिए, वो ये है, controlling your own performance under duress.
आने वाला जमाना है, जॉब्स अभी नहीं मिल रहे और मिल रहे हैं तो तुरंत चले जा रहे हैं. कैन वी कंट्रोल आवर परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर? कैन वी कंट्रोल आवर ओन फियर? बिकॉज फियर हैज अ पैरालिसिस इफेक्ट. हम आगे नहीं बढ़ पाते. इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है. जैसे कदीर साहब कह रहे थे, यू कैन क्लियर यूपीएससी, जस्ट कंट्रोल योर फियर, स्टार्ट वॉकिंग एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट. ऐसे पढ़िए जैसे 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है. कैन आई टेल यू द फर्स्ट एलिमेंट? उसे अर्थ कहते हैं. आपने अर्थ की माइनिंग कभी देखी है? फर्स्ट लेयर में हमें कोयला मिलता है. उसी तरह किसी बुक, किसी सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग में हमें वो कोयला मिलता है जो क्लास में सबको मिलता है. सेकंड लेयर में थोड़े से प्रेशियस मेटल मिलते हैं. सेकंड लेयर में हम प्रीलिम्स पास होते हैं. लेकिन थर्ड लेयर ऑनवर्ड्स जब हम जमीन की खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो प्रेशियसनेस of the metals and elements keep increasing. वैसे ही किसी किताब की थर्ड रीडिंग के बाद हमें वो मिलने लगता है जो हमें आईएएस बनाता है या फ्यूचर के लिए तैयार करता है. हमें अर्थ के खुदाई की तरह किसी कंसेप्ट की खुदाई करनी पड़ेगी बुक से. सेकंड है एयर. आपने एयर को देखा है? जैसे वो गरम गरम एयर जब ओशियंस के ऊपर से उड़ती है तो वेपराइज करके क्लाउड बनाती है. वैसे जब हमारा फोकस किसी कंसेप्ट, किसी बुक पर से गुजरे तो उसने क्वेश्चंस को हमारे दिल में रेज करना चाहिए. बहुत सारे सवाल दिल में उठाना चाहिए. आपने तीसरा देखा है, वो होता है वाटर. वाटर नदी की तरह कहीं से आता है और कहीं जाता है. उसी तरह एन आइडिया, उसके फ्लो को ट्रेस करना पड़ता है. ये आइडिया कहां से आया और कहां तक जाएगा, हाउ मच मोर इट विल इवॉल्व. और एक बहुत बड़ी चीज है चेंज. चेंज इज एन एलिमेंट. स्काई जिसे कहते हैं हम, दिन का कोई और स्काई होता है, रात का कोई और स्काई होता है, सुबह का कोई और होता है, शाम का कोई और होता है. उसी तरह वी हैव टू बी रेडी फॉर चेंज एवरी 6 months. इससे पहले चेंज आए और हमको पकड़ ले, चलो हम चल के चेंज को पकड़ ले. दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी, दिस इज हाउ वी हैव टू डू. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, बस मेरा वक्त शुरू खत्म होने वाला है. आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई किसने की है ड्यूरिंग लॉकडाउन? अमेज़न ने की है. कितनी कमाई की है? आज तक आपने ऐसी कमाई सुनी नहीं होगी. अमेज़न रीप्ड $11,000 पर सेकेंड. Amazon reaped $11,000 per second during lockdown. किसी ने आज तक $11,000 पर सेकंड नहीं कमाए होंगे. और Amazon जॉब्स कितने देता है? ये वीडियो देखिए आपको समझ जाएगा कितने जॉब्स देता है. ये इनका फुलफिलमेंट सेंटर है या इंसान ही नहीं है. रोबोट्स, दे आर डूइंग एवरीथिंग. ये देखिए आप, ये इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं. The robots, they take the product, the robots, they do the product, everything. जो डिलीवरी बची है वो इंसानों के हाथ में बची है, और वो भी बॉटम ऑफ द पिरामिड के हाथ में अभी तक बची है. लेकिन when the drones will start delivering, वो चीज भी हमारे हाथ से चली जाएगी और इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी. So we have to be ready. 62 richest people दुनिया में 8 बिलियन की आबादी में, फर्स्ट 62, they have 3.6 billion poorest people से ज्यादा वेल्थ. ज्यादा है, सेम लिखा है लेकिन वो ज्यादा है. ऑक्सफैम का रिपोर्ट है. आपको एक बात बताऊं, जिसके पास भी दौलत डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होती है वो एआई में और एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करता है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सहारा लेता है. तो अब एक आखिरी बात, हम सब का डेटा जमा हो रहा है. Wherever we are going, we are leaving the digital footprints, और उसको लेकर हमें टारगेटेड एड्स दिखाई जा रही हैं. बहुत जल्दी एक ऐसा वक्त आएगा that this targeted ads, this digital footprints that we are leaving, ये MBA से अच्छा मार्केटिंग और सेल्स करके दिखाएंगे. तो फिर हमें उस दिन नौकरी कौन देगा? और आजकल पता है ये डेटा कहाँ यूज होता है? यस, हम सब जानते हैं, ये इलेक्शंस को सेट करने में यूज होता है. ये पेपर कटिंग है. इंटेंसिफाई द सोशल मीडिया स्लग फेस्ट, एक बड़े पार्टी के लीडर ने कहा इन बंगाल है.
कैन यू इमेजिन? बस ये आखिरी पॉइंट है मेरा, जिसके बाद हम बात को खत्म करेंगे। इस चश्मे के आने के बाद एजुकेशन सिस्टम विल कोलैप्स कंप्लीटली। वो दिन ज्यादा दूर नहीं, इसलिए मैं आपको अभी बताने आया हूं। इस चश्मे में यू कैन सी एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एक लेंस में भी आने वाला है। 9 कंपनीज आर वर्किंग, गूगल करके देखिए, दिस सुपर स्पेक्स, इसमें लिख कर आता है, सामने से नहीं दिखता लिखा हुआ, अंदर से दिखता है। तो जब आपके आधार, जब ये पहनकर आप किसी को देखेंगे तो उसके आधार कार्ड की डिटेल दिखाएगा ये आपको स्क्रीन पर, तब आप उसका नाम पहले से जानते हो। डू यू नो दिस गॉगल विल चेंज एवरीथिंग। उस गॉगल की तैयारी कर कर यूपीएससी बैठा है। अब वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि गांधी जी ने एनसीएम कैसे किया था, सीडीएम कैसे किया था, कस्तूरबा से शादी कब की थी, साउथ अफ्रीका में कब गए थे, कब वापस आए। अब गांधी ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब एलेक्सा और सीरी और कॉर्टाना नहीं दे सकते। वो पूछते हैं, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? इफ गांधी वेयर अलाइव टुडे। इस तरह के सवाल आते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में भी which amongst the following sentences are correct, और 5 सेंटेंसेस 5 बुक में से मिलते हैं। यूपीएससी का दावा है कि आप हमारा आंसर क्वेश्चन पेपर लेकर गूगल के सामने बैठिए, लाइब्रेरी में बैठिए, विकिपीडिया खोल कर बैठिए, यू कांट आंसर बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग, वो मैं पहले बता चुका हूं 10 स्लाइड पहले। दे आर आस्किंग क्रिएटिविटी, दे आर आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग। जब तक आप अपने में पैदा नहीं करेंगे, you are not going anywhere, neither in your future nor in UPSC. मेरा एक स्टूडेंट है जो 2nd रैंक आया था इंडिया में, उसने बहुत अच्छी बात लिखी थी। पता है क्या लिखा था? उसने लिखा था, अगर गांधी आज जिंदा होते तो इंडिया में मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे होते तो हम उनको निकाल के पाकिस्तान भेज देते। पाकिस्तान जाते तो गांधी चुप नहीं रहते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ते। तो पाकिस्तान उनको निकालता तो हम अमेंडेड सीएए में गांधी जी को वापस लेते। और गांधी जी फिर एक पद यात्रा निकालते अगेंस्ट जीएसटी, डांडी मार्च करते और गांधी जी उपवास करते कि राम का मंदिर हर दिल में है, इसे जमीन पे बनाने से ज्यादा अपने दिल में मजबूत करो। गांधी जी खुद लॉयर थे तो वो लॉयर नहीं रखते, उनका एक पॉडकास्ट होता, यूट्यूब चैनल होता, एक फेसबुक होता और एक ट्विटर अकाउंट होता जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। आपको पता है, इस क्रिएटिविटी, इस क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से ही गॉट द 2nd रैंक। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह से पढ़ाई करते हैं? अब ये क्वेश्चन नहीं आता, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स, इतनी लड़ाइयां, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत। और पहली बार जब ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था ना, लोग गूगल के पास भागे थे, तो गूगल ने कहा तो सॉरी दिस पेज कांट बी फाउंड। आज भी गूगल के पास आंसर नहीं है, एक्सेप्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर अपलोड किया है वो खोल के दिखाता है। You have to start thinking from the right side of your brain. I leave you with this most beautiful thing. The illiterates of the 21st century, the illiterates of the 21st century, they will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. आप अपने अंदर ये बात पैदा करिए, डेटा मत जमा करिए, डेटा बहुत है। गूगल पर एक दिन में क्विंटिलियन 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा एक दिन में गूगल पे जनरेट होता है। आपकी गाड़ी की स्पीड से लेकर आप घर कब पहुंचेंगे से लेकर हर चीज, इतना डेटा पहले से है और डेटा मत लाइए। 2.5 क्विंटिलियन बाइट, क्विंटिलियन में जीरो कितने होते हैं पता है? 10 to the power 18। उसे मीनिंग मेकिंग चाहिए। मैं आखिरी 2 मिनट में दिखाना चाहता हूं कैसे पढ़ाई करते हैं। बाद में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे इशारा हो गया कि मेरा वक्त खत्म हो गया। ज्योग्राफी में ह्यूमिडिटी का चैप्टर अगर पढ़ते हो और एसी ह्यूमिडिटी के पानी को पीछे के पाइप से निकालता है, तो एयर कंडीशनर से गिरने वाले पानी को देखकर सोचना है और एक ऐसी मशीन बनानी है जो हवा में से पानी बना दे, जो हवा में से पानी बना दे। ह्यूमिडिटी के चैप्टर को पढ़ते समय फादर को बच्चे से पूछना होगा, वेयर कैन यू यूज दिस कंसेप्ट। उसे बचपन से क्रिएटिव बनाना होगा। उसी तरह ये वीडियो गेम्स खेलते वक्त, इवन नाउ प्लेइंग गेम्स इज मैंडेटरी।
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछना कि वीडियो गेम खेलना क्यों जरूरी है। मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ये हमारा सुखोई इंडिया का, जिसको रशिया अपग्रेड करना चाहता है, बिना पायलट के ये फ्लाई होगा, बिना पायलट के, फ्रॉम ग्राउंड बाय द कंट्रोलर। इंडियन एयरफोर्स में बहुत जल्दी एक एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, हु ऑल आर बेस्ट प्लेयर ऑफ वीडियो गेम्स दे कैन अप्लाई फॉर इंडियन एयरफोर्स। पर अमेरिका कहता है कि हमारे प्लेन में तो ग्राउंड में कंट्रोलर भी नहीं चाहिए, वो खुद ही कंट्रोल करता है, खुद ही डिसीजन लेता है। This is how they are doing. This is how they are making automated armies. और अल्लाह के वास्ते कोडिंग मत सीखना, कोडिंग मत सीखना बचपन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना। ये फराह खान का जो एडवर्टाइजमेंट है ना, मैंने अपने बच्चों को कोडिंग सिखाई। कोडिंग मत सीखना, क्यों? जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा ना, कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आज भी ऐसा होता है, विक्स पे जाकर, wix.com पे जाकर हम अपना वेबसाइट खुद डिजाइन कर सकते हैं, हम अपना ऐप खुद बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया है। ये कोडिंग सारी ऑटोमेटेड हो जाएगी बच्चों। इसकी जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, अडेप्टेबिलिटी, एजिलिटी, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। हमें पानी के स्पेक्ट्रल एनालिसिस को पढ़कर ये समझना होगा, कैन वी मेक अ की चेन, जिससे हम पानी की प्योरिटी को नाप सके, और पानी के ग्लास को पकड़ के उस की चेन के अंदर से जब हम सन रेज को पास करें तो उसका रियल टाइम डेटा हमारे मोबाइल पे आ जाता है। ये इजराइल का एक स्टार्टअप है जो ये बताता है ये पानी पीने लायक है कि नहीं है। हमें ऐसी तैयारी करनी है। ये पानी है, आपको करना ये है कि ये की चेन से उसको स्कैन करना है, and it will tell you in 2 seconds where the water is potable or not. इसका मतलब है बचपन में विबग्योर पढ़ते समय प्रिज्म में से लाइट जाने से कितने स्पेक्ट्रल एनालिसिस निकलते हैं, उसको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और मेरा आखिरी चीज मैं आपको दिखाऊं, और वो ये है, बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है इसलिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ। This is how if we don't adapt then we will perish. और अगर हम पेरिश हो गए तो बहुत वक्त लग जाएगा वापस आने में। इसलिए द टाइम इज नाउ टू चेंज, द टाइम इज नाउ टू चेंज द वे वी स्टडी, टू चेंज द वे वी थिंक। और एक आखिरी चीज एएमपी के लिए, एएमपी के अच्छे कामों को देखते हुए, आपकी टीम की मेहनत को देखते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब जॉब्स नहीं मिलने वाले, सो वी हैव टू इन्वेंट अ जॉब। एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड को इंस्टॉल करने के लिए एएमपी के प्लेटफॉर्म में कोर्स आना चाहिए, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर whose startup will thrive in the future. क्योंकि now is the time not to apply for the job but rather to create job. जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए, मुझे इतनी ही बात आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर समीर भाई, इट वाज क्वाइट अ फैसिनेटिंग सेशन ऑफ योर्स एंड आपने भी एक शेर का सहारा लिया था। मैं भी एक लाइन सिर्फ इतनी कहूंगा कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन वक्त की कमी है हम लोगों के पास, हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ले पाएंगे आपका, इंशाल्लाह सम अदर टाइम। और विद रिस्पेक्ट टू एएमपी, माशाल्लाह आप हमेशा से एएमपी के वेल विशर रहे हैं और आपने हमेशा एएमपी के प्लेटफॉर्म पे और एएमपी के अलावा भी एएमपी का जिक्र करा है कई जगहों पे। और आपने जैसे अर्ज करा एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के ताल्लुक से हमारी टीम ऑलरेडी उस पर काम कर रही है एंड वी विल डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव यू सम टाइम। और आज तो ये यूपीएससी का था और आपसे उस चीज़ों में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वक्त कम है, आपने समीर साहब पहले ही काफ़ी सवालात के जवाब आप दे चुके हैं। स्टिल अगर किसी भी अटेंडीज के पैनलिस्ट के कोई सवाल हो, पैनलिस्ट कैन आस्क डायरेक्टली और अटेंडीज जो हैं वो सवालात अपने सेक्शन में क्विकली वो लिख दीजिए। वील जस्ट हैव 2-3 मिनट्स टाइम ओनली। मेरे पे कुछ सवाल डायरेक्ट आए हैं, जब तक Q&A सेक्शन में और सवाल आते हैं। एक साहब मेरे से जानना चाह रहे हैं कि उनका लड़का जो है वो क्लास 10th में पढ़ता है, तो व्हेन ही शुड स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर यूपीएससी? फॉर यूपीएससी सबसे पहले लैंग्वेज एनालिसिस, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल, थिंकिंग को इंक में, थिंक टू इंक कन्वर्ट करना, ये सब 10th और 8th के क्लासेस में बेस को बिल्ड किया जाता है। किसी चीज की गहराई में उतरना,
कि अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, इसका जवाब सिर्फ कस्तूरबा दे सकती है। तो गांधी जी को पढ़ते समय कस्तूरबा बन के सोचना, भगत सिंह को पढ़ते समय चंद्रशेखर आजाद जो उनके मेंटोर थे उस तरह सोचना। तो ये सोचने की, ये एनालिसिस की, अडेप्टेबिलिटी की अभी से आदत अपने बच्चे को डलवाना पड़ेगा। ओके, मैं एएमपी के ताल्लुक से आपसे एक मशवरा चाहूंगा कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एएमपी, व्हाट शुड वी कैन do on guiding students to create awareness and connect to the existing training institutions like Zakat Foundation, Shaheen, and people like you. How we should use our channel, like since आपका मशवरा क्या रहेगा? आप एएमपी के बारे में भी जानते हैं और हालात जो है आजकल उसके बारे में भी सब जानते हैं. What would be your suggestion to us? फारूक भाई, एएमपी के अच्छे कामों से इंस्पायर होके लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से अलग एक अलिफ्स एकेडमी बनाई है, alifs.org नाम है। उसमें हम एकदम जिसको कहते हैं नथिंग, मतलब 0.1% फीस पर पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। एएमपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन और कैरियर में अमेज़न का काम कर रहा है। वो दुनिया भर से हीरो को चुन कर लाता है और हीरे जवाहरातों के रसिया जो होते हैं, जौहरी, उनको चुन कर लाता है और डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट करवाता है। तो आपको दो चीजें इस वक्त एएमपी के प्लेटफॉर्म पे शुरू करनी चाहिए। एक एजुकेशन फॉर फ्यूचर, और एक एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप नेशन। ये दो चीजें हमारे देश को भी आगे ले जाएंगी, ये दो चीजें हमारे बच्चों की एजुकेशन को भी आगे ले जाएंगी। ये एएमपी पे दोनों प्रोग्राम में टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि इसके सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैंने इसकी तारीफ लंदन से सुनी हुई है, जो एएमपी वाले के लंदन वाला ब्रांच है, आप सोचिए, दे आर सो सेटिस्फाइड बाय द वे यू गाइस वर्क। तो ऐसे और भी विजनरी, आगे की तरफ देखकर, यू आर द लीडर, कल को सेंस करके आज लाना पड़ेगा। Jazakallah. Inshallah, we will work on the same. Team is already working, and we'll definitely seek your advice and association in this regard. सवाल तो वैसे ऐसे कुछ नहीं, एक दो तीन सवाल हैं। समीर साहब, ये समुराई का नाम क्या था जो आपने उसमें रोबोट का बताया था? YouTube पे आप इसको सर्च करेंगे, समुराई वर्सेस यशकावा, तो वो अपने आप खुल जाएगा। YASHKAWA, उनका रिकॉर्ड खुल जाएगा, उनका पूरा रिज्यूमे खुल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करिए, अपने बच्चों को दिखाइए कैसे चीजें बदल रही है, नए जमाने के तकाजे क्या हैं। थोड़ा आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ सोचें, बस वही हमें अपने अंदर पैदा करना है। एक किताब बताऊं मैं, बस एक किसी साहब ने जी बताया, स्टार्टअप नेशन इजराइल, वो हमें सबको पढ़ना चाहिए। रिकमेंडेड है, मैंडेटरी है इंडिया के हर किसी इंसान को, इसलिए कि जो ज्यूज के साथ हुआ था होलोकॉस्ट, उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या किया कि टुडे दे हैव बिकम नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड एंड नाउ दे आर डूइंग एट्रोसिटीज। वो एक अलग पहलू है जिसके लिए हमें खड़े होना चाहिए, बट द वे दे हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स, वो वाली बात हर कौम में पैदा होना चाहिए। वो हिंदू में पैदा होना चाहिए, वो मुस्लिम में पैदा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड एंड एजुकेशन ऑफ टुमारो, वो वाली चीज। हाउ कैन वी स्टार्ट अवेयरनेस अबाउट यूपीएससी इन मस्जिद? मेरे कहने पे रायचूर की डिस्ट्रिक्ट में एक काम हो रहा है, जहां हम चप्पल उतारते हैं मस्जिद में, वहां एक नोटिस बोर्ड लगा है। उस नोटिस बोर्ड पर हर गवर्नमेंट सर्विस के एक वो लाकर, इश्तिहार लाकर वो लगा रहे हैं, और जुमा के दिन 10 मिनट एक रेलिवेंट ग्रेजुएट खड़े होकर बच्चों को बता रहा है कि कौन कौन सी नौकरी की तैयारी कैसे कैसे करनी है। और मस्जिद में हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी की टीम को आप इनवाइट करिए, वो आकर बताएंगे आपको। सईद साहब, कदीर साहब, वो इतना पेनफुल काम करते हैं, वो एक एक डिटेल को बच्चों को समझाते हैं। तो मस्जिद में ये एक हैदराबाद में काम कर रहा है, कैरियर गाइडेंस काउंसिल, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वो जोहर के बाद साइंस की, असर के बाद इंग्लिश की और मगरिब के बाद मैथ्स की ट्यूशन दे रहे हैं मस्जिद में। और 43 मस्जिद में पेरेंट्स इसलिए खुश हैं कि उनका बच्चा 3 बार जमात से नमाज पढ़ रहा है। ये मस्जिदों का इस्तेमाल है जो उनसे हमको सीखना चाहिए। तो एएमपी को मैं उनका नंबर दूंगा, वो उनको बुलाएंगे, and they will share the best practices inshallah. Yes, Hyderabad में they are doing a fantastic job, and there are around 40 plus masajid those who are come together. This, mashallah.
चलिए वक्त अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट. लेट्स क्लोज इट एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच वन ऑफ आवर स्पीकर. और मेरी दरखास्त रहेगी हमारे सिविल सर्विस एकेडमी के सैयदुद्दीन साहब से, आपसे भी और अब्दुल कदीर साहब से भी कि AMP, KSA and Kuwait chapter is very active and they are supporting India in a big way. So we would definitely would like your contribution and your association in our both the chapters. Furqan bhai is there. He is from our KSA chapter only. So I'll connect you with them. और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसके साथ जोड़ के हम लोग आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे. एंड इट इज जस्ट अ स्टार्ट. और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस तरह से सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे. तो एक बार मैं फॉर्मली आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त वो निकाला और यहाँ पर आए. और बहुत अच्छी बातें रही. वक्त का बहुत कमी रही. आई थिंक वी शुड प्लान काइंड ऑफ सीरीज काइंड ऑफ ये वेबिनार. वो एक दिन का काम नहीं है, 15-20 दिन की सीरीज होगी, तभी हम लोग उसको फ्रूटफुली वो कर पाएंगे. तो जज़ाकल्लाह खैर. कोई मेरा और साथी कोई बात रखना चाहे तो रख सकता है. सूफिया, फुरकान भाई, रज़ाक भाई. जी फारूक भाई, मैं कुछ मतलब समीर भाई प्लीज अब्दुल कदीर साहब और सईद साहब को कुछ कहना चाह रहा था कि इस तरह के सेशंस जो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, और जिस तरह का पैशन, जिस तरह का एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ थिंग जो डेवलप हुआ स्टूडेंट्स के अंदर, एक छोटे से सेशन से आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. तो वी नीड मोर सच सेशंस फ्रॉम यू इफ यू कैन हैव, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर रियली वंडरफुल. जो स्टूडेंट्स AMP के साथ जुड़े हुए हैं वो हर इंडिया के हर कोने से हैं अल्हम्दुलिल्लाह. So it's like we will be more than happy to have you on other sessions. इस तरह के सेशंस आप समीर साहब से, स्पेशली मैं अब्दुल कदीर साहब से और सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की हम लोगों को जरूरत है, हमारे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह. मैं आपको फुरकान भाई अब्दुल कदीर साहब के बारे में एक बात बताता हूँ. अब्दुल कदीर साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर के जनरल मैनेजर है. दिन में 4 वेबिनार कर रहे हैं कौम को जगाने के लिए, इस नेशन को जगाने के लिए. अब आप सोचिए इस बात को, 4 वेबिनार. मोहम्मद सईदुद्दीन साहब ने पूरे NRIs को उठाया हुआ है इस वक्त की एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लाना कितना जरूरी है. माशाल्लाह, दैट्स रियली very appreciating and inshallah we will connect. मैं अब्दुल कदीर साहब, ये दोनों साथी ये दोनों लोग जब AMP के साथ आएंगे तो सिनर्जी एक अलग ही रहेगी. इंशाल्लाह. कदीर साहब और सईद साहब का साथ ही अगर AMP के साथ रहेगा तो हम जी फारूक भाई, बशीर भाई हमारा ब्रिज है, वो हम सबको कनेक्टेड रखते हैं माशाल्लाह. दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है हम लोग. इंशाल्लाह अल्लाह हमारे जो है कोशिशों को कबूल करे. वी आर ऑलवेज विद यू. Whenever you want our services, we are available. Alhamdulillah. Thank you so much for your valuable time. It was really helpful. I request all the students here to visit alifs.org and see what amazing work Samir Sahab is doing. Closing dua karwa. Sure. Sir, before closing, on behalf of Civil Service Academy Hyderabad, being General Manager, I sincerely thank the Association of Muslim Professionals, Mumbai, for their valuable opportunity to express our speakers' ideology in front of your students and your organization. Thank you very much, sir. Thank you very much. Furqan bhai, before the closing, I want to say something. Sure. A mesmerizing session by the speakers of today. I would like to give a special thanks to Mr. Muhammad Bashir, Muhammad Saiduddin, and the takeaways for the attendees by Mr. Abdul Qadir. Civil services are the mother of all services. So just remember the takeaway. And Mr. Sameer Siddiqui, hats off to you for providing such a brilliant presentation and about the communication skills, the intonation that you are saying, you are the live example for that. It was so soothing to hear your voice and many takeaways from you. Being a human being which a machine cannot copy, and chase the change and think to ink. And last but not the least, Startup Nation Israel, you must, all the attendees, you must need to read this book. Thank you very much. Thanks a lot for the wonderful session. Apart from the basics of the IAS, PSC, and every other information that you gave, the motivational
lecture and the sort of session that you have presented is one of its own kind. Thanks a lot. And thanks the attendees also for being very cautious and taking interest. I was trying to have some poll, but then I was also mesmerized by Mr. Samir Siddiqui's session that I feel like raising hand is okay. Don't go for the poll. Thanks a lot. Thanks everyone. And we can now officially have the closing dua and close the session. Thank you. Furqan bhai. Thank you. दुआ कर लेते हैं. Yes. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ऐ अल्लाह इस सेशन के जरिए से जितने लोगों को फायदा हुआ है, ऐ अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों पे अमल करने की और इन चीज़ों को आगे ले जाने की, ताकि कम्युनिटी सर्विस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन और कौम की तरक्की के लिए इस चीज़ को कामयाबी अता कर. ऐ अल्लाह जितने भी स्पीकर्स, जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन में शामिल हुए हैं, सबको कामयाबी अता कर और सबको अपना फ्यूचर बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह इस तरह के इनिशिएटिव्स को, इस तरह के कामों को बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमा और इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमा. वा खुदा व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहीम. Thank you so much everyone for joining in. Thank you, Samir Saab.